Hey guys, welcome back to the new episode of Podcast in Minutes. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WTF is the next gen thinking. ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हम इंडिया के अंडर 30 फाउंडर्स और चेंज मेकर्स को लेकर बात करने वाले हैं कि कैसे दे सी द वर्ल्ड, कैसे वो अपनी जर्नीज कार्व कर रहे हैं और क्या लेसन्स मिलते हैं उनके इन एक्सपीरियंसेस से। आज के एपिसोड में होस्ट निखिल के साथ मिले हैं नव्या, तारा, आदित्य और कैवल्य। सब टैलेंटेड 20 से 22 साल के फाउंडर्स हैं जो पैंडेमिक के बीच में अपने वेंचर स्टार्ट करके एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचे। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इस समरी में हम डीप डाइव करेंगे इन फर्दर टॉपिक्स लाइक नंबर 1 यूथ कल्चर एंड पंक्चुअलिटी, नंबर 2 pandemic era entrepreneurship journey. Number 3, quick commerce insights and dark stores. Number 4, consumption habits and value for money. Number 5, social media, influencers and validation. Number 6, media consumption, cinema versus OTT. Number 7, career aspirations, marriage and life goals. Number 8, education, learning styles, and personal growth. And number 9, final takeaways and call to action. Now, before we dive into our summary, a quick note. This summary isn't meant to replace the full podcast experience. We deeply appreciate the original content and encourage you to listen to the complete episode to enjoy every detail. Our summary is here to give you a time saving snapshot, while the full conversation remains a must watch for all the rich insights. Chapter 1, Youth Culture and Punctuality. पॉडकास्ट की शुरुआत हुई एक लाइट हार्टेड डिबेट से। व्हाट्स रॉन्ग विद द टुडेज यूथ? निखिल ने पूछा कि 20 ईयर ओल्ड्स क्यों लेट आते हैं। नव्या, तारा, आदित्य एंड कैवलियर अपने एक्सक्यूजेस शेयर करते हुए कहते हैं कि ट्रैफिक या मेडिकल एक्सक्यूजेस चल जाते हैं, बट मोस्टली टाइम मैनेजमेंट एक बिग इशू है। डिस्कशन पिवट करता है टुवर्ड्स अ जनरेशनल शिफ्ट। जेंजी लोग गुड सर्विस डिमांड करते हैं और अपनी कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज करते हुए ईट एंड लीव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं अगर वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो। द की इनसाइट, पंक्चुअलिटी इशू सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं बल्कि एक सिम्टम है वाइडर कंजम्पशन माइंडसेट का। टाइम इज द न्यू लग्जरी। चैप्टर 2, पैंडेमिक एरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। व्हाट्सएप बेस्ड ग्रॉसरी डिलीवरी। पैंडेमिक की लॉकडाउन के बीच मार्च 2020 में कैवलियर और आदित्य ने अपनी लोकल कॉलोनी अंधेरी ईस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप चैट बना के एल्डरली नेबर्स के लिए ग्रॉसरी डिलीवर स्टार्ट की, बिना किसी प्लान के, बस एक फ़ी चार्ज करके। वन स्टॉप डिलीवरी से 300 ऑर्डर्स पर डे विद इन 30 to 40 डेज अचीव हुआ। कॉन्ट्ररी कैपिटल फेलोशिप। उन्होंने अप्लाई किया कॉन्ट्ररी कैपिटल फेलोशिप के लिए, जहां उन्हें 40 लाख रुपए यानी कि नियरली इक्वल्स टू 50,000 यूएस डॉलर्स की सीड फंडिंग मिली ऑन अ 2.5 मिलियन यूएसडी वैल्यूएशन। ये जीरो क्वेश्चंस फंडिंग प्रोग्राम स्पेशली गैप ईयर स्टार्टअप्स के लिए डिज़ाइन था। डार्क स्टोर पिवट। मार्केट प्लेस मॉडल इनिशियल ट्रैक्शन के बाद उन्होंने यूज़र फीडबैक से समझा कि स्पीड सक्स, डिलीवरी नियरली 45 to 60 मिनट्स लेती है। सॉल्यूशंस, डार्क स्टोर्स लॉन्च करना, 3,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एक माइक्रो वेयर हाउस टक्ड अवे एलाइज में, जहां पिकर्स एंड पैकर्स 5 से 10 मिनट डिलीवरीज इनेबल करते हैं। जुलाई 2021 में बैंड्रा में डार्क स्टोर लॉन्च हुआ। 24 महीनों में 5,000 करोड़ का सेल्स क्रॉस किया। वाई कॉम्बिनेटर एंड सीरीज ए, बी एंड सी। लेट 2020 में YC फंडिंग ऑफ अबाउट 125,000 यूएस डॉलर मिली। फिर सीरीज ए बाय नेक्सस में नियरली अराउंड 10 मिलियन यूएस डॉलर्स जस्ट बिफोर जुलाई 2021। सीरीज बी में 50 मिलियन यूएस डॉलर्स 45 डेज के आसपास में, एंड सीरीज सी में 100 मिलियन यूएस डॉलर्स लेड बाय YC ग्रोथ फंड। दिसंबर 2021 में अब 5 फंडिंग राउंड्स कंप्लीट होते हुए टोटल उन्होंने रेज किए हैं
nearly around 5,000 crore valuation. The startup mantra: trust the data, customer conversations, unit economics, consistent iteration on speed, and cost drive growth. Chapter 3: Quick Commerce Insights and Dark Stores, यूनिट इकोनॉमिक्स एंड लास्ट माइल कॉस्ट। डिलीवरी ड्राइवर का जो कॉस्ट है वो नियरली 75 रुपीज़ है पर आवर। एक ऑर्डर पर आवर 75 रुपीज़ पर ऑर्डर। दो ऑर्डर पर आवर अगर हम करते तो जो कॉस्ट है वो हाफ हो जाती है। डार्क स्टोर improves density, throughput up, cost down. Revenue streams: number one, inventory sales, which is the core one. Number two, delivery fees, minimal, free over 199 rupees. Number three, advertising income. CPG brands pay around 100% margin ads. Competitive landscape: Zepto versus Flipkart or Amazon. Zepto owns inventory in dark stores versus centralized F&B warehouses of Amazon. Localized nimble execution and Six Sigma discipline. Toyota model differentiates the Zepto. Quick commerce globally is struggling. Zepto's focus is on operational rigor makes it profitable today at nearly around 0.35% grocery penetration. Chapter 4: Consumption habits and value for money. Gen Z के लिए good service is equals to reasonable cost plus high quality, ना कि luxury per se discussion points. Commodities branding opportunity. Dry fruits, rice जैसी staple commodities पे D2C quality control and branding का gap है. Number 2. Category expansion. Zepto अब ग्रॉसरी के साथ स्टेशनरी, किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब डिलीवर करता है। Consumption philosophy: value driven, convenience focused, experience rich. Chapter 5: Social media, influencers, and validation. Social media platforms. Gen Z, Instagram सबसे पॉपुलर है शॉपिंग प्लस एंटरटेनमेंट के लिए। ओल्डर जनरेशन, फेसबुक फॉर न्यूज़ एंड यूट्यूब फॉर लॉन्ग फॉर्म। इन्फ्लुएंसर कल्चर, वैलिडेशन का डोपामिन लोप, लाइक्स और सेलिब्रिटी डीएम्स पे टू प्ले मॉडल्स, ethical responsibility. Influencers should vet products, services that they promote, especially finance or health sectors. There's an advice for an aspiring influencer: authenticity over aesthetics. Pick your niche, finance, arts, education, and build trust, not just follow a count. Validation economy. Algorithm amplifies scarcity and pseudo exclusivity. Chapter 6: Media consumption, cinema versus OTT. Cinema love, collective experience, escapism, social outing. Theaters basically are rebounding post COVID. The rise of OTT. Relatability, binge watch culture, and most of all, convenience. Tier 2 or 3 challenges. Multiplex penetration is quite low. 2000 screens है जहाँ पे ज़रूरत है 30 लाख की. High capex है और regulation slow expansion. Content preferences. Gen Z are craving lighter rom-coms and situational comedies alongside serious fare. The future of content? Hybrid model. OTT subscription for niche, multiplex for flagship releases and experience. Chapter 7: Career aspirations, marriage and life goals. Nikhil actually सबसे अपनी life goals पूछते हैं. Navya and Adit says marriage around 30 to 35 and then kids eventually. Tara says she doesn't believe in marriage or kids, so questioning the social norms, values the personal freedom and self evolution. Cavalier and Adit is basically focused on business growth first, personal life later. Life choices of Gen Z and millennials को ट्रेडिशनल माइलस्टोन्स जैसे कि मैरिज एंड किड्स अब पर्सनल प्रेफरेंस की लेंस से देखना अच्छा लगता है. चैप्टर 8: एजुकेशन, लर्निंग स्टाइल्स एंड पर्सनल ग्रोथ. सब अग्री करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन इज फ्लॉड. ओवर एम्फसाइज ऑन एग्जाम्स, rote learning, and conformity. Number 2, alternative models: Montessori, project based, skill focused programs, just like coding boot camps, maker spaces, etc. Entrepreneurship mindset: parents actually encourage the stable jobs.
The youth is actually hesitant to take risk. We need the entrepreneurship narrative from the school age. Number 4, mental health and therapy. Self awareness, documenting thoughts, just like doing your journaling or dream logs, finding the right therapist is quite critical for your personal growth. The recommendation: integrate soft skills, financial literacy, first aid, interpersonal communication into early curricula. Final takeaways and call to action. Number 1, measure and iterate. डेटा ड्रिवन डिसीजन से स्टार्ट करो, whether बिजनेस हो या पर्सनल हेल्थ. नंबर 2, ऑपरेशनल रिगर. क्विक कॉमर्स या कोई भी वेंचर, डिसिप्लिन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैंडेटरी है. नंबर 3, वैल्यू फर्स्ट कंजम्पशन. सर्विस क्वालिटी प्लस कन्वीनियंस पे फोकस, ना कि स्टेटस. नंबर 4, ऑथेंटिक इन्फ्लुएंस. सोशल मीडिया का मिसयूज मत करो, अपने कंटेंट से रियल वैल्यू प्रोवाइड करो. नंबर 5, हाइब्रिड कंटेंट फ्यूचर. सिनेमा का चार्म प्लस ओटीटी की कन्वीनियंस, दोनों का बैलेंस ही सस्टेनेबल है. नंबर 6, पर्सनल ग्रोथ. एजुकेशन रिफॉर्म के साथ सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि जर्नलिंग, थेरेपी को इंटीग्रेट करो. नंबर 7, एंटरप्रेन्योरशिप नैरेटिव. स्कूल्स और कम्युनिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप को वायबल एस्पिरेशनल करियर बनाओ, नॉट जस्ट रिस्क की कहानी. नंबर 8, life choices. When it comes to marriage, kids, lifestyle, I think we should appreciate their personal choices. And lastly, call to action. अगर आप इंस्पायर्ड हो इन फाउंडर्स की जर्नी से, तो आज ही अपने आइडियाज़ पे स्मॉल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो. व्हाट्सएप कम्युनिटी हो, नीश ई कॉम हो, पॉडकास्ट क्रिएशन हो, ट्रस्ट द डेटा, इटरेट रैपिडली एंड फाइंड योर प्रोडक्ट मार्केट फिट. और हाँ, अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान से चूज़ करो. Authentic experiences, lifelong learning, and disciplined execution will define your next decade. So keep questioning, keep iterating, and most importantly, keep it real. With that being said, इस वीडियो को यहीं पे wrap up करते हैं. Thank you so much for watching this episode of Podcast in Minutes. My name is V, and I'm gonna see you in the next one. Till then, take care. Signing off.